वाणी चल रही थी 10 जुलाई 1967। The Vani of July 10th, 1967 was going on. तीसरे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। In the third page, in the middle, the topic was going on. ये सूरज चांद सितारे क्या है? What are this sun, this moon, and these stars? वो तो समझते हैं कि ये भी देवताएं हैं। They think that they are also deities. और तुम कहते हो ये स्थूल सूरज चांद सितारे तो इस मांडवे की बत्तियां हैं। And you say that this physical sun, moon, stars are the lights of this universe. यहाँ ही खेल होता है। It is here that the play takes place. तो ये बत्तियां यहाँ भरी है। So these lights are here. मूल वतन में, सूक्ष्म वतन में ये बत्तियां होती नहीं है। These lights are not in the world of origin and the subtle world. और तुम तो सूरज चांद सितारों से भी पार जाते हो। And you go even beyond the sun, the moon, and the stars. यहाँ का भी ये खेल कैसे शुरू होता है, फिर ये खेल कैसे पूरा होता है, वो तुम बच्चे ही जानते हो। Only you children know how the play here begins, then how this play is completed. और ये अनादि खेल चलता ही चला आता है। And this eternal play goes on continuously. चक्र फिरता रहता है। The cycle keeps on rotating. प्रलय तो होती नहीं है। The total annihilation doesn't take place. प्रलय माने कुछ भी न रहे। The total annihilation means that nothing would remain. ये भी गीता में मुंह भूले है। This is also the mistake in the Gita, जो महाप्रलय दिखा दी है, that they have shown the great annihilation. राजयोग तो सिखाया, तो राजयोग की रिजल्ट क्या हुई? He did teach the Raja Yoga, and then what was the result of the Raja Yoga? पांडव कहाँ चले गए? Where did the Pandavas go? भारत तो अविनाशी खंड है। Bharat is the imperishable land. इसका तो कभी विनाश होता नहीं है। Its destruction never happens. इसमें तो सदैव मनुष्य रहते ही है। The human beings always live on it. और जलवायु भी कभी होती नहीं है। And the great flood never takes place. कि सारी शक्ति जल में डूब जाए। So that the entire creation would be sunk in water. जीव जंतु आदि की भी जो पैदाइश है, वो भी होती रहेगी। The birth of the living creatures and so on will also take place again and again. बाकी जो भी खंड है, वो सतयुग त्रेता आदि में नहीं रहते हैं। No other land remains in the golden and silver ages. द्वापर से फिर शुरू होते हैं। They come to existence again from the Copper Age. तुमने जो कुछ भी दिव्य दृष्टि से देखा है, वो फिर प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। You will see in reality whatever you have seen through the divine vision. प्रैक्टिकल में तुम देखते हो। You see it in reality. क्योंकि तुम ही वैकुंठ में जाकर के राजी करेंगे। Because only you will go to paradise and rule. उस वैकुंठ के लिए तुम पुरुषार्थ करते रहते हो। You keep on making efforts for that paradise. फिर भी बाप कहते हैं, However, the father says, याद की बड़ी भारी मेहनत है। the remembrance is a very hard work. क्योंकि माया याद नहीं करने देती है। Because Maya doesn't allow to remember. इतने प्यारे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है। One should remember with great love such a dear father. अज्ञान काल में भी बहुत प्यार से बाप की महिमा करते हैं। Even at the time of ignorance, they praise the father with great love. हमारा बाबा ऐसा है, फलाने मर्तबे वाला है। Our Baba is like this. He has such and such position. अभी तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारी सृष्टि चक्र का ज्ञान बैठा हुआ है। Now the knowledge of the entire world cycle sits in the intellect of you children. बुद्धि में सब धर्मों की नॉलेज है। The knowledge
of all the religions is in the intellect. जैसे वहाँ पर सिजरा है, Just like there is the dynasty, यहाँ पर फिर मनुष्य शक्ति का सिजरा है। here there is the dynasty of the human world. गाते भी हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, They sing also the great great grandfather. तुम ग्रेट को जानते हो, You know the great one, परंतु फिर पहले पहले अपनी अवस्था को भी देखते रहना। but first you have to check your stage. 10 जुलाई 1967 की वाणी का चौथा पेज। The fourth page of the Vani of July 10th, 1967. कथनी तो है, परंतु फिर करनी भी चाहिए। There are words, but actions are required as well. बाबा, हम तो आपसे पूरा ही वर्षा लेकर के छोड़ेंगे। Baba, we will leave having taken from you the complete inheritance. वर्षा पूरा लेंगे तो चलन भी वैसी चाहिए। We will take the complete inheritance, therefore the behavior also should be like that. क्योंकि ये एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। It is because this is the only one teaching to become Narayan from a man. ये तुमको बाप आकर के सिखाते हैं। The Father having come teaches you this. नर से नारायण बनने का राजयोग सिखाते हैं। He teaches the Raja Yoga to become Narayan from a man. और राजाओं का राजा भी तुम ही बनते हो। And only you become the King of Kings. और कोई खंड में ऐसे होते नहीं है। Such ones don't exist in any other land. तुम ही पवित्र राजाएं बनते हो। Only you become the pure kings. फिर बिगर लाइट वाले मंदिर बनाते रहते हैं। They keep on building temples without lights. मंदिर बनाने वालों को लाइट नहीं होती है। Those who build the temples don't have light. मंदिर बनाकर के पूजा करते। Having built the temples, they worship. गीता पढ़ने वाले को ये थोड़े ही समझते हैं Those who study the Gita don't understand कि राजाओं का राजा बनने का अर्थ क्या है। what the meaning of becoming the King of Kings is. अभी तुम जानते हो बाबा हमको फिर से राजाओं का राजा बनाए रहे हैं। Now you know Baba is making us again into the King of Kings. उसके लिए हम पढ़ते हैं। We study for this. स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? Why do the students forget the teacher? ऐसे टीचर को तो कब नहीं भूलना चाहिए। One should never forget such a teacher. कहते हैं बाबा माया बुलाई देती है। They say, Baba, Maya makes us forget. सारा दोष माया के ऊपर रख देते हैं। They shift the entire blame on Maya. अरे Well, याद तो तुमको करना ही है ना। you do have to remember, don't you? मुख्य टीचर तो एक ही है, बाकी और सब है बाई प्लॉट्स। There is only one main teacher. All the others are byplots. बाप को भूल जाते हो Since you forget the father, तो तुम टीचर को याद कर सकते हो। then you can remember the teacher. टीचर तुमको नई नई पॉइंट्स देते हैं। The teacher gives you new points. तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। You are given 3 chances. बाप को याद करो, Remember the father, टीचर को याद करो, or remember the teacher. नहीं तो सदगुरु को याद करो। Otherwise, remember the true Guru. अगर एक को भूलते हो तो दूसरे को याद करो। If you forget one, remember the other. वो लोग तो गुरु का लॉकेट पहन लेते हैं। Those people wear the Guru's locket. उनको मिलता तो कुछ भी नहीं, They don't receive anything. वो सिर्फ अपनी दिल खुश कर लेते हैं। They only please their hearts. मुक्ति का जीवन मुक्ति का अर्थ भी नहीं समझते। They don't understand the meaning of liberation and the liberation in life. वो तो आत्मा कोई नहीं जानते। They don't know the soul. कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। They say, I am a soul,
therefore the Supreme Soul. तो देखो ऐसा कहते कहते कितना दुर्गति को पाई है. So, look, they have become so much degraded while saying this. बाप कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार जिन्होंने कल पहले समझा है वो ही आकर के समझेंगे. The father says, according to the drama plan, only those who understood a cycle ago will come and understand. बाप साक्षी होकर के देखते रहते हैं. Having become an observer, the father keeps on watching कि कौन-कौन अच्छी रीति पढ़ाते हैं. who teaches in a proper way. तो पढ़ाने वाले टीचर नंबरवार तो होते हैं. Because the teachers who teach are number-wise. दिन प्रतिदिन नंबर वृद्धि को पाता जाएगा. Every day the number will go into expansion. बच्चों को हार्ट फेल नहीं होना है. The children mustn't get a heart attack. राजधानी तो स्थापन होनी है. The capital has to be established. कहा जाता है कि पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध बड़ी. It is said the efforts are great or the results of the previous deeds are great. तो जवाब देंगे कि पुरुषार्थ ही बड़ा है. We will say that the efforts are great क्योंकि पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है. because the results are received from the efforts. मनुष्य पुरुषार्थ के बगैर तो रह ही नहीं सकते. The human being cannot remain without efforts. कर्मेंद्रिय है तो कर्म की धारा जरूर चलेगी. There are the organs, so the current of the action will certainly flow. आज के मनुष्य योग के नाम पर कितना कमाते हैं. The today's human beings earn so much in the name of the yoga. आग में चलते हैं, पानी में चले जाते हैं, परंतु इस सबसे फायदा तो कुछ भी नहीं. They walk in embers, they go into water, but there is no benefit from all this. क्योंकि गति सदगति के लिए तो कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते. It is because no one can make the effort for salvation and the true salvation. तो ये सब उनका है कुसंग. All of them are the bad company. और बाप का है सत्संग. And the father is the true company. जो भी गुरु लोग हैं वो अपन को ही लात मारते हैं और फॉलोअर्स को भी लात मारते हैं. All the gurus kick themselves as well as their followers. यहाँ फिर माया बड़ी जोर से ठूसा लगाती है. And over here, Maya gives punches with great force. बच्चों को मार मार करके खत्म ही कर देती है. She strikes the children and finishes them off. तो बाबा कहते रहते हैं कि चार्ट भेजो. So Baba says all the time, send the chart. तो बाबा भी तुम्हारे चार्ट को देखे. Then Baba will see your chart. तुम अभी चार्ट लिखते नहीं हो. Now you don't write the chart. जब बिना सामने देखेंगे तो बहुत डरने लग पड़ेंगे. They will start to dread when they see destruction before them. सोचेंगे मौत सामने खड़ा है. They will think death is standing before us. अभी तो हम पुरुषार्थ करें. Now let us make efforts. याद की यात्रा में तीखा जावे. Let us become swift in the pilgrimage of remembrance. अभी तो गफलत में बहुत रहते हैं. Now many remain careless. लड़ाई में कोई गफलत करते हैं तो बहुत चोट लग जाती है. If someone is careless in the fight, he gets wounded seriously. तो अभी भी बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए. So now the children shouldn't be careless. बाबा ने साधारण तन का लोन लिया. Baba took an ordinary body on loan. इनकी कितनी कमाई थी. He earned so much. और कोई जवाहराती ऐसा व्यापार नहीं कर सकता. No other jeweler can do business like this. जवाहरियों के झुंड में In the crowd of jewelers, बता सकते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं. he can say what we can do. थोड़े पैसों से कितना फायदा निकालते थे. He used to bring a lot of benefit out of little money. ऐसा फर्टाइल धंधा भी छोड़ दिया. He even gave up such a fertile job. समझते हैं कि अब तो बस बाप से ही हमको लेना है. He thinks
Now that's it. We have to take from the father alone. तो ये बाबा की ही ताकत थी जो इनसे सब कुछ छुड़वाई दिया. So it was only the power of Baba which made him give up everything. साथ में रहने वाले भी थे. There were also those who lived together. बच्चे भी थे. There were also children. सब चले गए. Then they left. उनको कहा गया कि साथ में रहो. It was said to them, stay together. खान पान आदि सब कुछ मिलेगा. You will receive everything, eating and drinking and so on. इसी कमाई में लग जाओ. Engage yourself just in this earning. शादी की हुई बच्ची को भी छुड़वा करके ले आए. He even made his married daughter give up the household and brought her. बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे जो ध्यान में जा करके प्रोग्राम ला करके देते थे. There were very good children who, having gone into a trance, used to bring and give programs. 3-4 नंबर में आने वाले अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया रूपी ग्रह हप कर गया. The crocodile-like Maya gobbled up the very good Maharathis who were to come into number 3-4. उनकी बात मत पूछो, बहुत दुर्गति में चले गए. Don't ask about them. They became very degraded. बाप कहते हैं कि माया बड़ी दुष्ट है. The father says that Maya is difficult to be defeated. कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं. They say, Baba, a lot of storms of Maya come. अरे बल माया के तूफान आते हैं फिर भी मेहनत तो करनी है ना. Oh, even though the storms of Maya come, you have to make efforts, haven't you? जितना जो पढ़ेंगे अपने आप को राज तिलक देंगे. To the extent one will study, one will give the royal tilak to oneself. बाबा को तो कुछ नहीं मिलेगा. Baba won't receive anything. बाबा तो पढ़ाई पढ़ाकर वापस चला जाएगा. Baba will go back having given the teaching. बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं. Baba only teaches. राजाई का तिलक तो तुम अपने आप अपने को देते हो. You give the royal tilak to yourselves. तो यहाँ कृपा की अथवा आशीर्वाद की बात नहीं है. So there is no question of mercy and blessing here. ऐसे बहुत बच्चे लिखते हैं. For example, many children write, कि बाबा हमारे ऊपर कृपा करो. Baba, have mercy on us. वास्तव में ये कृपा आशीर्वाद या अक्षर भक्ति मार्ग के हैं. In reality, these words, mercy, blessing, belong to the path of the religious devotion. यहाँ पर तो बाप को याद करना है. Here one must remember the father. याद करने पर ही कर्म विनाश होंगे. The vicious actions will be finished only through remembering. तो बाप रास्ता बताते हैं. So the father shows the way. कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा. He says, I will go with you too. अकेला वापस नहीं जाऊंगा. I won't go back alone. तब जाऊंगा जब कि तुम पवित्र बन करके लायक बन जाओगे. I will go back when you become worthy, having become pure. बाकी साथ में तो सबको चलना है. Nevertheless, everyone has to go together. ऐसे चलेंगे जैसे मक्खनों का झुंड जाता है. They will go just like the flock of locusts. मक्खनों का झुंड जब निकलता है, When the flock of locusts flies out, तो सूर्य की रोशनी को भी ढक देता है. they cover even the light of the sun. उनका भी एक हेड होता है. They too have their head, जिस हेड के पीछे वो मक्खन भागते हैं. after whom those locusts run. अच्छा. All right. ओम शांति. Om Shanti. एक रात्रि क्लास है. There is one night class 10 जुलाई 1967 का. of July 10th, 1967. बच्चे और बच्चियां कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे. The sons and the daughters say, we will become Lakshmi and Narayan. तो बाप कहते हैं गोया ये सभी गुलाब के फूल बनेंगे. Therefore the father says, it means that all will become rose flowers. जो मुख से कहा जाता है वैसा पुरुषार्थ भी करना होता है.
one has to make efforts according to what one says through the mouth. तो सभी को बताना है So it should be told to everyone कि ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा है, that Shivbaba is the highest on high. और शिव बाबा ही भगवान वाच करते हैं। Only that Shivbaba utters the words of God. कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे। He says, if you remember me, your sins will be destroyed. और ये पैगाम सभी को देना है And this message has to be given to everyone. कि बाप पतित पावन है, The Father is the purifier of the sinful ones. उनको ही सभी बुलाते हैं। Everyone invokes just Him. वो बाप है, He is the Father. उनके तुम बच्चे हो। You are His children. बच्चे तो जरूर साथ में रहते हैं। The children certainly live together. पावन बाप के साथ पावन बच्चे ही रहते हैं। Only the pure children live together with the pure Father. रावण राज्य में आकर पतित बन गए। Having come to the kingdom of Ravan, they became impure and degraded. भक्ति में अनेक प्रकार के नाच नाचते रहते हैं। On the path of the religious devotion, they keep on performing various types of dances. अभी दीपमाला आती है। Now, the Deep Mala, the festival of lights, comes. व्यापारियों को तकलीफ होगी। Merchants will be in trouble. वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं ब्राह्मणों को बुलवा करके। They invite Brahmins and worship Lakshmi. सफाई आदि करवाते हैं। बाबा के पास व्यापारी तो बहुत आते थे। They get cleaning and so on done. Many merchants used to come to Baba. ख्याल करते होंगे He might think that ग्राहक को बुलाना होगा, लक्ष्मी की पूजा करनी होगी। he will have to invite customers. He will have to worship Lakshmi. सोचते हम तो खुद ही ब्राह्मण हैं, He thinks we ourselves are Brahmins जो कि देवता बन रहे हैं और वो शूद्र हैं। who become deities and they are Shudras. तो उस हालत में क्या करना चाहिए? What should be done in the situation like that? जो व्यापारी चौपड़ा रखने वाले तो अनेक होंगे। There will be many merchants who keep the account book. धन वृद्धि को नहीं पाता है। The wealth doesn't increase. ये भी सब तिकताल है। All this is also like a tune. ये सब रस्म रिवाज है। All these are traditions and rituals. बच्चे तो मुझेंगे कि हम क्या करें। The children will get confused. What should we do? बाबा कहेंगे वो साहब भल करो। Baba will say, all right, even if you do all that. ये धंधा दौरी भल करो। किसी को भी राजी करने के लिए थोड़ी बहुत पूजा भी कर लेनी चाहिए। All right, even if you do this work. To make someone satisfied, one has to do some worship as well. माताओं को तो फायदा हो गया। The mothers benefit. किस बात से? From what? जो माताएं बंधन में हैं, The mothers who are in bondage. घर वाले बहुत बंधन डालते हैं, पूजा नहीं करते। The householders impose a lot of bondage on them. They don't worship यह नहीं करते, or they don't do this. तो उनको थोड़ी छूट दे दी। Therefore, he gave them, it means to the mothers, a bit freedom. उनको राजी करने के लिए In order to make them, it means householders, satisfied, थोड़ी बहुत पूजा कर लेने में कोई हर्जा नहीं। there is no damage in certain amount of worship. अंदर में शिव बाबा को याद करते जाओ। Inside, remember Shiv Baba. बोलो Say, हम पूज्य बन रहे हैं, we are becoming worship worthy. तो अभी हम पुजारी हैं, Now we are worshippers. इसलिए पूजा करते हैं। For this reason we worship. ऊंचे से ऊंचे भगवान सबका पूज्य तो एक ही है। The highest on high God worshipped by all is only one. और सभी सारी दुनिया में भी पुजारी ही तो है। And all the others in the entire world are just worshippers. उनको याद करते हैं। They remember him. पूज्य देवताएं तो कोई याद नहीं करते। The deities worthy of worship don't remember anyone. देवताएं सतयुग में होंगे। The deities will be in the golden age. कलयुग में देवताएं कोई होते नहीं है।
No one is a deity in the Iron Age. अभी सभी पुजारी, Now all are worshippers. उन देवताओं को भी बाप ने पूज्य बनाया है। The Father made also those deities worthy of worship. तो ऐसी ऐसी बातें बता करके कोई को राजी करना पड़ता है। So, saying things like this, one has to make the others satisfied. अगर भक्ति छोड़ देंगे, If we give up the religious devotion, कुछ भी नहीं करेंगे, if we don't do anything, तो बहुत हलचल हो जाएगी। loads of panic will arise. तो ज्ञान मार्ग में बाप फिर बताते हैं युक्ति से चलो। So, on the path of knowledge, the Father says, act methodically. हलचल करने वाले मत बनो। Don't become those who create panic. गीता में भी बताया है। It is also said in the Gita. मनुष्यों की लिखी हुई गीता है It is the Gita written by human beings. कि ऐसी चाल चलना चाहिए जिससे कोई उद्योग के प्राप्त न हो। One should behave in such a way that no one will get troubled, हमसे कोई विचलित न हो जाए, that no one becomes anxious because of us. न हम किसी से विचलित होवे, Neither should we become anxious because of anyone, न कोई हमसे विचलित होवे। nor should anyone become anxious because of us. तो युक्ति चाहिए। So, the method is required. हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। We don't commit any sin. कृष्ण आदि को पूजना कोई पाप नहीं है, It isn't any sin to worship Krishna or anyone, परंतु उससे कोई पाप भस्म नहीं होते हैं। but no sins are reduced to ashes from this. दुनिया में पाप तो बढ़ते ही जाते हैं Sins in the world just increase, और दुनिया पाप की बनती जाती है। and it becomes the world of sin. पाप आत्माओं की बढ़ोतरी होती जाती है। The number of the sinful souls increases. पाप गाली देना भी है। Abusing is also a sin. बाकी तो पूजा करना, लक्ष्मी का आवाहन आदि करना, The rest, worshipping, invoking Lakshmi and things like this, ये कोई पूजा नहीं है। it isn't any worship. दुकान आदि की धंधाधोरी में तो जरूर ये करना ही पड़े, It will have to be done at the work like shops and so on. नहीं तो सभी क्या कहेंगे? Otherwise, what will all say? कहेंगे कल तो पूजा करते थे, They will say, yesterday they worshipped, आज ही नहीं करते, today they don't worship. जरूर ये नास्तिक हो गए। Certainly they have become atheists. तो तुम्हारा धंधाधोरी भी बंद हो जाएगा। Then your job will stop as well. इसलिए बाबा बता देते हैं For this reason, Baba says, कि ये भी सब थोड़ा दिखाने के लिए करते रहो, keep on doing it just for a little show. तो किसी को ख्याल नहीं आवेगा, So no one will have any bad thoughts वो हलचल में नहीं आवेंगे। and they won't get confused. अंदर में याद फिर भी शिव बाबा को करना है, Anyway, inside one has to remember Shiv Baba. परंतु औरों को दिखाने के लिए But in order to show to the others, सिर्फ मुंह हिला देना है। one should only move the lips. इसमें कोई पाप नहीं बनता है। It doesn't become any sin. ईश्वर को सर्वव्यापी मानना बड़ा पाप है। It is a great sin to consider God to be omnipresent. अभी तुम बच्चे समझते हो कि हमारी तो बेसमझ बुद्धि थी, Now you children understand. We had dull intellects. जो कि ये सभी हम पहले करते थे, ऐसे कहते थे। We used to do all this and used to say like this. अभी तो अविनाशी रत्नों का व्यापारी हमको मिल गया। Now we have found the businessman of the imperishable jewels. तो अभी हमें क्या करें? So what should we do now? बाप तो इनमें बैठ करके सर्विस करते हैं, The Father is sitting in them and does service. तो सभी को थोड़े ही छोड़ रहे हैं। Not all have to give up the household. जो घर गृहस्थ में रहते हैं, बच्चों की पालना करते हैं, धंधाधोरी करते हैं, Those who remain in the household, who foster the children, who work, वो छोड़ करके तो रह नहीं सकते।
They can't give up the household and live like this. इनको तो निमित्त बनना ही था, He had to be made instrumental. तो धंधे आदि से इनकी दिल हट गई। So he withdrew from work and so on. परंतु तुम बच्चे तो घर गृहस्थ में रहते हो, But you children live in the household. एकदम दिल नहीं हटानी है। You mustn't withdraw at once. पैसे कमा करके फिर सर्विस में लगाने पर पाई भी असरफी बन जाएगी। By having earned money and then investing them into service, even a penny will become a golden coin. सेंटर्स खोलेंगे, You will open centers, उसमें फिर सर्विस करेंगे, then you will do service in them. तो भी पैसे तो चाहिए, Nevertheless, money is required. पैसों से ही सर्विस करेंगे। You will do service with money itself. कभी भी कोई बात ऐसी आती है If you have any problem at any time, तो फट से बाबा से पूछो। ask Baba immediately. कहीं पर पार्टी में जाना है, If you have to go somewhere to a party, वहाँ अगर कहते हो कि हम दूसरे के हाथ का नहीं खाते, and if you say there that you do not eat from the hands of others, तो वो फील करने लगेंगे। they will feel bad. कहते हम कोई खराब है क्या, They say, are we inferior? हम कोई मेहतर है क्या। Are we sweepers? तो कोई भी ऐसी ऐसी बातें सामने आती है तो बाबा से पूछना चाहिए। So if you face any problem like this, you should ask Baba. बाबा फ्री कर देंगे। Baba will make you free. आजकल तो रिश्वत आदि भी बहुत चलती है। Nowadays, bribes and so on are in practice very much. नंबरवार सारे ही लाइन वाले बांट कर खा लेते हैं। All who are in the hierarchy number-wise distribute them and use them up. फिर अगर उन लेने वालों में कोई नहीं लेता है तो उनको नौकरी से ही छुड़वा देते हैं। If anyone from among those who take bribes doesn't take, they dismiss him from work. एक बच्चे को कोई भी आफत आ जावे If a child gets into any difficult situation, तो वो बच्चा पूछ सकता है, that child can ask, पति से पावन बनने की हमको राय दो। give us advice to become pure from impure. तुम बच्चे जानते हो कि हम पुनर्जन्म लेते हैं। You children know that we take rebirth. अभी गंगा स्नान अभी तक करते आए हैं। Up till now, sometimes you have been going to bathe in the Ganges. भक्ति मार्ग में बहुत गपोड़े लगाते हैं। On the path of the religious devotion, they say a lot of nonsense. कहते हैं गंगा जल का बहुत प्रभाव है। They say the water of the Ganges exerts great influence. जब मरते हैं तो मनुष्य पीने के लिए गंगा जल रख देते हैं। When human beings die, they keep the water of the Ganges for drinking. विलायत में भी बहुत साथ में ले जाते हैं। Many take it with them even to the foreign countries. तुम बच्चों को तो सभी खिटपिटों से बिल्कुल छुड़वाई दिए। Your children have been totally released from all these botherations. ये भक्ति मार्ग की बातें फिर क्यों करते हैं? Then, why do they perform these rituals on the path of the religious devotion? मरते हैं When they die, तो गंगा जल मुंह में रख देते हैं। they pour the water of the Ganges into the mouth. ऐसा क्यों करते हैं भक्ति मार्ग में? Why do they do like this on the path of the religious devotion? इतना प्रभाव गंगा जल का क्यों माना है? Why is the water of Ganges considered to have such influence? इस सारी सृष्टि में जब मरा पड़ेगा, When death strikes in this entire world, विनाश होगा, when the destruction takes place, तो अंत में ज्ञान गंगाएं निकलेंगी। then at the end the Gangas of knowledge will emerge. भक्ति मार्ग में तो स्थूल पानी को पवित्र मानते हैं। On the path of the religious devotion, they believe the physical water to be pure. पानी की बात नहीं है, This is not a question of water. पवित्र जीवन की बात है। This is the question of the pure life. ऐसा पवित्र जीवन धारण करने वाली ज्ञान गंगाएं जो भी ज्ञान सुनाती है,
all the knowledge given by the Gangas of knowledge, who lead such a pure life, वो लोगों के मन पर मस्तिष्क पर छप जाता है, will make an impact on the minds of the people. बाप कहते हैं, The father says, तुमको तो मरते समय कोई गंगा जल आदि नहीं पीना है. at the time of death, you don't need to drink any water of the Ganges and so on. स्थूल गंगा जल आदि की बात ही नहीं. There is no question of the water of the physical Ganges. युक्ति से चलते रहना है. One should behave methodically. कृष्ण की भक्ति करो. घर वाले कहते हैं, The family members say, worship Krishna. अच्छा जी, That's fine. कृष्ण की भक्ति भी करता हूँ. I also worship Krishna. तो हर बात में रांझू रमजबाज बनना होता है. So one has to become Ramju Ramajbaj in everything. One who is so intelligent that knows how to satisfy everyone. कोई बात में अड़ना नहीं चाहिए. One shouldn't get stubborn in anything, जो घर बार में हलचल हो जावे. so that there would be confusion in the household. कोई भी बात में ध्यान हो तो बाबा से पूछ सकते हो. If there is concern in anything, you can ask Baba. कहीं मुझते हो तो बाबा बता सकते हैं. If you are confused somewhere, Baba can say, पूछो. ask. ऐसे न हो कहीं पर पाप बन जावे. So let it not be like this, that you will commit a sin somewhere. बाबा तो बैठे ही हैं पाप से बचाने के लिए. Baba is sitting to save you from sins. बाबा को तो याद ही करते हो You just remember Baba, कि हमारे पाप कट जावे. so that your sins would get cut. कोई कोई ब्राह्मणी कहती है, मेरे से पूछे बिना, मेरे को दिखाए बिना कोई भी चीज अथवा कोई भी पत्र बाबा के पास नहीं भेजना. Some Brahmanis say, don't send anything or any letter to Baba without asking me, without showing me. सब ब्राह्मणी नहीं कहती है, कोई कोई ब्राह्मणी कहती है. Not all the Brahmanis say so. Some Brahmanis say so. बाबा कहते हैं नहीं. Baba says, no. ये कोई भी ब्राह्मणी को कहने का हक नहीं है No Brahmani has right to say, कि मुझे दिखाए बगैर बाबा के पास कोई चीज नहीं भेजना. don't send anything to Baba without showing me. कोई पत्र नहीं भेजना. Don't send any letter. हर एक को हक है Everyone has the right बाबा के पास डायरेक्ट पत्र भेजने का. to send a letter directly to Baba. कोई भी चीज बाबा के पास डायरेक्ट भेज सकते हो. You can send anything directly to Baba. बाबा को पता ही कैसे पढ़े How would Baba know कि टीचर ठीक पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं. whether the teachers teach properly or don't teach properly? ये टीचर सवेरे सवेरे उठते हैं या नहीं उठते हैं. Whether these teachers get up early in the morning or don't get up? खुद ही नहीं उठते होंगे If they don't get up themselves, तो स्टूडेंट का क्या हाल होगा. what will be the situation of the students? तो बाबा को साफ साफ लिख देना चाहिए. So one should clearly write to Baba. बाबा को बताना चाहिए One should let Baba know कि हमारी ब्राह्मणी that our Brahmani हमको कहती है कि सवेरे में उठ करके याद करो. tells us to get up early in the morning and remember, और खुद तो देरी तक सोती रहती है. and she herself sleeps till late. ऐसे बाबा को साफ साफ लिख देना चाहिए. One should write to Baba like this clearly. 10 जुलाई 1967 की वाणी का दूसरा पेज. The second page of the Vani of July 10th, 1967. जांच करनी चाहिए One should check कि ये ब्राह्मणी कितने समय उठती है. at what time this Brahmani gets up. ब्राह्मणी को कोकड़ ज्ञानी तो नहीं होना चाहिए. The Brahmani shouldn't be a cock in knowledge. इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी हक है बाबा के पास ब्राह्मणी का समाचार भेजने का. For this reason, Baba says, everyone has the right to send to Baba
the information about the Brahmani. हमारी ब्राह्मणी कहीं पर नवाबी से तो नहीं चलती है। Doesn't our Brahmani behave like a ruler by any chance? क्योंकि बाबा तो कहते हैं मैं बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आया हूँ। Because Baba says, I have come as the obedient servant of the children. और ब्राह्मणी सदैव हुक्म चलाती रहती है। And the Brahmani always gives orders. सेहत ठीक है, If health is all right, तो सब कुछ हाथ से करना चाहिए। one has to do everything with one's own hands. अपनी सेवा अपने हाथ से करना चाहिए। One should do one's own service with one's own hands. अपने कपड़े धोना, Washing one's own clothes. सारा काम अपने हाथ से करना है। All the work one should do with their own hands. ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी रानी होकर के बैठी रहे। It isn't like this that the Brahmani would sit like a queen. दूसरों से सेवा नहीं लेनी। One mustn't take service from others. अगर कोई बीमार है तो दूसरी बात है, It is something different if someone is ill. नहीं तो आदत पड़ जाएगी। Otherwise, it will become a habit. कहेंगी चाय ले आओ, She will say, bring tea, रोटी ले आओ, bring roti. नवाब ही बैठकर बन जाती है। She assumes the position of a ruler. बाबा देखो कितनी निर्माणता से चलते हैं। Look, Baba behaves so humbly. तो गुस्सा नहीं करना है, So one mustn't get angry. बहुत मीठा बनना है, One has to become very sweet, जो किसी को कोई दुख न हो। so that no one would get sorrowful. जानते हैं सभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं। You know that not everyone has become complete. समझानी देनी चाहिए। One should explain. जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फिर दूसरे भी करने लग पड़ेंगे। The others will start performing the same actions as we do. देखो ये तो नवाब बन जाती है। But look, she becomes a ruler. यहाँ आते हैं तो बाबा हल्का करते हैं। When they come here, Baba makes them light. निरहंकारी होकर के रहना है। One must remain egoless. निराकार आते तो जरूर है। Certainly, the incorporeal comes. कोई शरीर में ही आते, He comes into some body. वहाँ दिखाते हैं कि मैं निरहंकारी हूँ। They show there that I'm egoless. नहीं तो कहते हैं कि तुम पतितों के पास मुझे आने की क्या दरकार है। Otherwise, he says, why do I need to come to you, the impure and degraded ones? निरहंकारी हूँ तभी तो आता हूँ। I'm egoless. That's why I come. तो तुम बच्चों को भी नम्रता में बहुत रहना। So you children must be very humble. जो क्रोध करते हैं उनका रजिस्टर में खाता खराब हो जाता है। The account of register of those who get angry gets spoiled. तो जांच करनी चाहिए। So one has to check. माया बहुत चक्कर में ले आती। Maya misleads very much. स्वर्ग में तो पुण्य आत्मा ही होती है। Only the charitable souls are in paradise. ये तो है पाप आत्माओं की दुनिया। This is the world of the sinful souls. स्वर्ग में जो पुण्य आत्माएं देवताएं होते हैं, The charitable souls, the deities who are in paradise, उन्होंने पुण्य कहाँ कमाया? where did they gain the merit? स्वर्ग में तो पुण्य और पाप बनता नहीं है। The merit and the sin are not present in paradise. तो पुण्य कहाँ कमाया? So where did they gain the merit? जरूर कहेंगे संगम युग में पुण्य कमाया। Certainly, it will be said that they gained the merit in the confluence age. और देवताएं तो पाप कर्म करते नहीं है। And deities don't perform the sinful actions. उनके पाप का कोई खाता भी नहीं होता है। They don't have any account of the sinful actions. तो ये पाप का खाता कहाँ खत्म किया? So where did they finish this account of sins? कहेंगे जरूर पूर्व जन्म में बाप की याद में रह करके पापों का खाता खत्म कर दिया।
It will be said, certainly, in the previous birth, remaining in the remembrance of the father, they finished the account of sins. तो जरूर कहेंगे स्वर्ग में पुण्य आत्माएं होती हैं। So, certainly, it will be said that the charitable souls are in paradise. और ये तो अभी है पापात्माओं की दुनिया। And now, this is the world of the sinful souls. और वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। And that is the world of the charitable souls. कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। Krishna is also called a great soul. परंतु इस दुनिया में तो सब महात्मा झूठे हैं। But all the great souls in this world are false. यहाँ सब के सब पापात्मा हैं। Here, all the souls are sinful. ये है ही पाप की दुनिया। This is the world of sin. महान आत्मा भी कोई को कह नहीं सकते। No one can be called a great soul. आत्मा को महान आत्मा कैसे कह सकते हैं? How can a soul be called a great soul? महान कर्म तो कोई करते नहीं। No one performs the great actions. पाप आत्माएं तो जरूर पाप कर्म ही करेंगे। The sinful souls will certainly perform the sinful actions. एक गीत भी बनाया था कि साधु अक्षर बेगाना। One song was also created. A holy man means one who is beyond the connections. ये तो बाप से ही हुए बेमुख कर देते हैं। They turn others back from the Father. अपनी पूजा करवाने वाले को One who gets himself worshipped हिरण्यकश्यप कहा जाता है। is called Hiranyakashap. जो बैठ करके अपनी पूजा लेते रहते हैं। The one who sits and goes on receiving the worship of him. भक्त लोग आकर के उनका चरणामृत बैठ करके पीते हैं। The worshippers come and drink the water in which their feet have been washed. कहाँ पर तो देवताओं का चरणामृत, There is a difference between the nectar of the deity feet कहाँ फिर ये मनुष्यों का चरणामृत। and the nectar of these human feet. बाप आकर के सब बातें समझाते हैं। Having come, the Father explains everything. रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं। Your actions become the vicious actions in the kingdom of Ravan. तुम जो भी कर्म करेंगे Whatever action you perform, विपरीत कर्म का खाता बन जाता है। it becomes the account of the opposing actions. फिर आधा कल्प में तुम सुखधाम का मालिक बन जाते हो। Then for half a cycle, you become the master of the abode of happiness. प्रदर्शनी आदि में जो इतना खर्च होता है, इसमें प्रजा तो ढेर बन जाएगी। Many will become subjects through the exhibitions, etc., which are so costly. अभी भी विचार करो कितनी प्रजा बनती है। Think right now, how many subjects become? 11 जुलाई 1970 रात्रि क्लास। The night class of July 11th, 1967. बच्चे हो अथवा बच्चियां, Whether there are sons or there are daughters, बाप तो कहेंगे बच्चे, the father will say, sons. और ये अलौकिक बाप कहेंगे बच्चे बच्चियां। And this subtle father will say, sons and daughters. छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। Even the small children understand that God teaches us. कहाँ तो भगवान पढ़ावे Where would God teach? और कहाँ ये मनुष्य गुरु बैठ पढ़ावे। And where would these human gurus teach? बाप ने समझाया है The Father has explained कि देवी देवताओं को मनुष्य नहीं कहेंगे। that the deities will not be called human beings. क्यों नहीं कहेंगे? Why won't they be called this? देवी देवताओं को मनुष्य क्यों नहीं कहेंगे? Why will the deities not be called human beings? और द्वापर युग से मनुष्यों को क्यों कहा जाता है? And why from the Copper Age it is said the human beings? कोई तो कारण होगा। There must be some reason. देवताओं का मन मर्ज हो जाता है The mind of deities becomes merged, और मनुष्यों का मन मर्ज हो जाता है द्वापर युग से।
And from the copper age, the mind of the human beings emerges. मनुष्यों का मन चंचल होता है. The mind of the human beings is unstable. देवताएं तो अचल होते हैं. The deities are stable. उनकी इंद्रियां भी अचल होती हैं. Their organs are stable as well. तो देवताओं को मनुष्य नहीं कहेंगे. Those deities won't be called human beings. इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है मननात् मनुष्य है. For this reason, it was also written in the scriptures. मननात् मनुष्य है. मनन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है. One who churns is called a human being. देवताओं को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार ही नहीं. क्यों? The deities don't need to churn. Why? क्योंकि देवताएं तो सदगति को पाए हुए हैं. It is because the deities have obtained the true salvation. मनन चिंतन मंथन उनको करना होता है जो दुर्गति को पाए हुए हैं. Those who have fallen into degradation have to churn. भगवान आकर देवताओं की सदगति करता है. God comes and brings about the true salvation of the deities. कई तो अपन को फिर भगवान भगवती भी कहने लग पड़ते हैं. Then many start to call themselves a god, a goddess. परंतु भगवान भगवती कोई होते ही नहीं. But no one is god and goddess. भगवान खुद ही आकर के भगवान भगवती बनाते हैं. God himself comes and creates the god and the goddess. वो भी कहेंगे देवी देवता. They also will be called Devi Devta. उनको श्रेष्ठ बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा जरूर भगवान निराकार है. The one who makes them elevated is certainly the highest on high incorporeal God. ऐसे नहीं. It isn't like this कि इनको किसी ने देवता बनाया है. that someone has made them deities. नहीं. No. भगवान वाच है. It is the words of God, Bhagavanuvach. देवी देवता उवाच नहीं है. It is not the words of the deities, Devi Devta Uvach. ये सभी नई दुनिया के लिए नई बातें हैं, नई पढ़ाई है. All these are new topics, the new teaching for the new world. शास्त्र में तो सब झूठी बातें मनुष्यों ने लिखी हुई. The human beings wrote everything false in the scriptures. इस समय अंतिम जन्म सांवरा है. At this time, the last birth is black. बाप कहते हैं, The father says, हम तुमको बिल्कुल ही प्योर देवता बना देता हूँ. I make you completely pure deities. तुम कितना सुंदर बन जाते हो. You become so beautiful. बच्चे भी जानते हैं The children know as well. कि यहाँ पर हमको भगवान पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए. Here God teaches us in order to make us the masters of the world. तो जानते हो वहाँ शैतान पढ़ाते हैं और यहाँ भगवान पढ़ाते हैं. So you know, the devil teaches there, and here God teaches. अभी बाप पूछते हैं Now the father asks, कि विश्व का महाराजा महारानी बनना अच्छा, बाबू जी समानी पढ़ाई पढ़नी अच्छी. is it good to become the emperor and empress of the world? Or is it good to study that bodily teaching? कहते हैं कि हम परीक्षा पास करके फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगे. They say, having passed the exams, we will engage ourselves in this teaching. तो बाप क्या जवाब देते हैं? So what answer does the father give? बाप जवाब देते हैं, The father gives the answer. अगर तुम परीक्षा पास करने में लग जावेंगे और बीच में मर जावेंगे तो क्या होगा? What will happen if you engage yourselves in passing the exams and die in the meantime? बुद्धि से काम तो लेना चाहिए. One should make use of the intellect. बहुत समय थोड़ा है. There is very little time. मरने के पहले पढ़ाई पढ़ना तो अच्छा है ना. It's good to study the teaching before dying, isn't it? इस राजयोग से तुम बच्चों की आयु बड़ी होती है. Your lifespan, children, becomes long through this Raj Yoga. आयु बड़ी होती है इस याद की यात्रा से. From this pilgrimage of remembrance, the lifespan becomes long. भविष्य में बड़ी आयु वाले तुम बन जाते हो. In the future, you become those who have a long lifespan. सतो प्रधान भारत था तो बड़ी आयु वाले थे.
When Bharat was Satopradhan, the lifespan was very long. अभी तमो प्रधान भारत है, Now Bharat is Tamopradhan. तो भारतवासियों की एवरेज आयु छोटी और थोड़ी रह गई. So the average lifespan of Bharat residents became short. तुम जानते हो, अभी फिर से हम बड़ी आयु वाले बन रहे हैं. You know, now we are becoming again those who have a long lifespan. तो ये पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए. So one has to start this study. बेहद का बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो. The unlimited father says only this, remember me. ये सब पढ़ाई का नशा चढ़ गया तो बहुत अच्छा है. It's very good if one gets intoxicated with this teaching. जो जो अच्छी अच्छी कुमारियां निकलेंगी उनको सर्विस में लगा देंगे. We will engage in the service the good Kumaris who will emerge. बाकी जो अच्छी नहीं होगी तो उनको रिश्तेदारों के पास भेज देंगे. We will send to the relatives those who are not good. हर बात में सब कुछ सिखाएंगे. We will teach everything in each subject. अंग्रेजी आदि भी सिखाएंगे. We will teach English and so on as well. फिर बच्चों में मोह की रग नहीं रहना चाहिए. Then, even a trace of attachment should not remain in the children. नहीं तो घर के रिश्तेदार संबंधी आदि याद आते रहेंगे. Otherwise, you will remember again and again the relatives and the others from home. तुम बच्चे बाप की याद में रहते हुए इस दुनिया को भूल जाते हो. You children forget this world while remaining in the remembrance of the Father. सारी दुनिया को भूल जाते हो तो घर बार याद कैसे पड़ेगा. If you forget the entire world, how will you remember the household? आग तो लगनी ही है Fire must be lighted, और विनाश होना ही है. and destruction must happen. ये विनाश कौन करते हैं. Who causes this destruction? शंकर काहे को किसी को मारते हैं. Why does Shankar kill someone? मारना करना तो पाप होता है. To kill is a sin. शंकर में कोई क्रोध है क्या. Is there any anger in Shankar? अगर शंकर में क्रोध है तो फिर उनको देवता कैसे कह सकते हैं. If there is anger in Shankar, how can he be called a deity? उनको तो कह देते हैं देवदेव महादेव. He is called the greatest deity. और यहाँ तो शिव बाबा कहते हैं And here, Shivbaba says, कि मैं शंकर द्वारा विनाश कराता हूँ. I cause destruction through Shankar. परंतु ये कहना रंग है. But it is wrong to say it. 11 जुलाई 1967 की वाणी का तीसरा पेज. The third page of the Vani of July 11th, 1967. किसी को कहना कि मुझको मारो Saying to somebody, go and kill him, तो जो मरवाने वाला है उसके ऊपर भी दोष आ जाता है. the fault is imputed on the one who orders to kill. मैं ऐसे थोड़े ही कहूँगा I don't say like this, कि इनको मारो. kill them. बाबा कहते हैं Baba says, कि प्रेरणा अर्थात विचार. inspiration means the thoughts. बाकी प्रेरणा आदि की तो बात ही नहीं. Otherwise, there is no question of inspiration. ना ही मैं किसी को कहता हूँ कि मारो. Neither do I say to someone, kill them. ये तो ड्रामा बना हुआ है. This is the preordained drama. आपस में भाई भाई ही लड़ते रहते. Even brothers keep on fighting among themselves. जो लड़ते हैं और लड़ाते हैं वो है आसुरी मत. Those who fight and cause fights belong to the devilish directions. अभी तुम जानते हो Now you know कि वो आपस में लड़ते हैं. that they fight among themselves. तुम पांडव हो. You are Pandavas. पांडव तो लड़ाई लड़ते ही नहीं. Pandavas don't fight. वो लड़ते हैं They fight, और मक्खन तुमको बीच में मिल जाता है. and you receive the butter in the meantime. तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो. You become the master of the entire world. बादशाही का माखन तुमको मिलता है. You receive the butter of the empire.
ये ड्रामा में नूद ही ऐसी है। It is fixed like this in the drama. ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ईश्वरी वो सब करते हैं। One shouldn't say that God does all that. तो जो भी अच्छा व बुरा कर्म करता है वो सब ईश्वरी ही करता है? नहीं। Then God himself does everything, whether one performs good or bad actions. No. ड्रामा में नूद है। It is fixed in the drama. नहीं, मैं जानी जाननहार हूँ। Neither do I know what is inside everyone. ये भी अंधविश्वास है It is also the blind faith कि भगवान सब कुछ जानते हैं। to think that God knows everything. सन्यासियों में भी तो अंधविश्वास होता है ना। The blind faith is also in the sannyasis, isn't it? बिना विश्वास तो वास्तव में पढ़ भी नहीं सकते हो। Actually, you can't even study without faith. कोई को विश्वास है तो यहाँ पढ़ाई पढ़ने आते हैं। If someone has faith, he comes here to study. बाप का वर्षा तो उतना ही पावेंगे जितना जो पुरुषार्थ करेंगे। One will receive the inheritance of the father according to the efforts one will make. तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत बहुत करना है। So you children have to make a lot of efforts. उसमें भी In that also, मुख्य तो है याद की यात्रा। the main is the pilgrimage of remembrance. ये सर्विस ऑफ हेल्थ है। This is the service of health. तुम परमात्मा प्रिय बनेंगे If you become dear to the Supreme Soul, तो तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। your health will become good as well. बाप कहते हैं अभी ये पार्ट पूरा होता है। The father says, now this part is completed. तुम घर जावेंगे फिर सुखधाम में आवेंगे। You will go home and then you will come into the abode of happiness. ये दुनिया तो है ही दुखधाम। This world is only the abode of suffering. सतयुग की महारानी महाराजा बनना है। You have to become the empress, the emperor of the golden age. वो है मशीन की सिलाई That is the stitching of a machine. और कपड़ों आदि की सिलाई आदि भी भले करना है। All right, even if one has to stitch clothes and so on. परंतु ये जो बुद्धियों की पढ़ाई है, राजयोग की पढ़ाई, वो जरूर पढ़नी है। But certainly you have to study this teaching of the connection of the intellect, the teaching of Raja Yoga. बुद्धि योग लगा करके बल वो पढ़ाई आदि भी पढ़ो और ये भी पढ़ो। All right, study that teaching having the connection of the intellect. Study this one as well. बाप राय देते हैं। The father gives advice. कन्या अगर होशियार है If a kanya is intelligent, तो सेंटर खोलेगी। she will open a center. चित्र सामने रख देते हैं, बहुत टॉपिक्स हैं जो बोर्ड पर लिख सकते हो। They place the pictures in front. There are many topics which you can write on a board. फिर वो टॉपिक्स पढ़ करके आते ही रहेंगे। Having read these topics, they will keep coming. समय भी लिखना पड़ता है Even the timings should be written, कि फलाने से फलाने तक ये सेंटर खुला रहेगा। that this center will be open from such till such time. मुख्य समय तो है सवेरे और शाम का। The morning and evening time is the most important. अपना दुकान आदि भी संभालना है। One has to maintain own shop, and so on. कोई आवे दिन में भी सर्विस करनी पड़े। If someone would come, then one would have to do service throughout the day as well. तो बच्चों को सोना नहीं है। So the children must not sleep. जो गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं वो भी सोते नहीं हैं। Those who are the servants of the government don't sleep either. सारा दिन कमाई करते हैं। They earn all day long. तुम भी अपनी कमाई करते हो। You also make your earnings. जागते रहोगे
तो अच्छी आमदनी आदि भी आवेगी। A good income will come if you remain awake. तुम्हारे लिए तो जागना बहुत जरूरी है। It's very necessary for you to remain awake. जिन जागा तिन पाया, That one who remained awake obtained. और जिन सोया तिन खोया। That one who slept lost. तुम बच्चों की तो सारा दिन ही सर्विस है। All day long, you children have only the service and the service. कोई ब्राह्मण ये भी कहती होगी Some Brahmanis may say, कि यहाँ दिन के टाइम पर मत आओ, don't come here during the daytime क्योंकि ये दोपहर का टाइम हमारे सोने का है। because the afternoon is our sleeping time. वास्तव में दिन में सोना ठीक नहीं है। In reality, it isn't good to sleep during the daytime. अभी जो रूहानी म्यूजियम का प्रबंध हो रहा है, In the spiritual museum that is being arranged now, उसमें तो तुम बच्चों को सोने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। you children won't have time even to sleep. सारा दिन आते ही रहेंगे। They will keep coming all day long. आगे चल करके इतनी सर्विस शुरू हो जाएगी In the future, so much service will start जो बच्चों को नींद करने का भी समय नहीं मिलेगा। that the children won't have time to sleep. फिर आदत को मिटाना पड़े। Then the habit would have to be removed. ऐसी खराब आदत को मिटाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। They will have to work hard in order to remove such a bad habit. जिन सोया तिन खोया, The one who slept lost. ये गायन भी इस समय का है। This is the song of this time. तुमको सर्विस करनी है You have to do service, तो टॉपिक्स भी निकालना चाहिए। therefore you have to pick up topics too. बाप को बहुत प्रेम से याद करना है। You have to remember the Father with great love. बाबा को ऐसे भी नहीं है कि बैठकर ही याद करना है। It isn't like this that one should sit down and remember Baba. नहीं, No. घूमते फिरते पैदल करते While moving around, walking, बाबा की याद में रहना है। one has to remain in the remembrance of Baba. काम करते भी दिल यार की तरफ हो रहे। Also, while working, let the heart be with the beloved. याद में रहने से प्राप्ति बहुत होगी। There are lots of rewards from remembering. और ये याद ही मुख्य है। And it is remembrance which is the main. इस याद में ही तुम बच्चे ठंडे हो। You children are called in remembrance. आधा कल्प के पाप सिर पर है, On the heart there are sins of the half of cycle, जो तुम्हें काटने हैं। which you have to cut. बाप कहते हैं The Father says, ये काम महाशत्रु है। this lust is a great enemy. इसमें ही सारी की कमाई चौपट होती है। The entire income is ruined just in this. अभी तुमको संपूर्ण बनना है। Now you have to become complete. अच्छा, All right. ओम शांति। Om Shanti. अगला रात्रि क्लास है 12 जुलाई 1967। The next night class is of July 12, 1967. लड़ाई के मैदान में मनुष्य को खबरदार बहुत रहना पड़ता है। The human beings have to remain very alert in a battlefield. ये भी तुम्हारी विकारों की लड़ाई का मैदान है। This is also your field of the battle with the vices. और ये मैदान अंतिम जन्म में ही खुलता है। And this field opens in the last birth itself. उन्होंने तो स्थूल युद्ध दिखाई दिया है। They showed the physical war. ऐसे तो गीता में लिख दिया है They wrote like this in the Gita. कि हे अर्जुन, O Arjun, काम और क्रोध ये तेरे महाशत्रु है। lust and anger are your great enemies. परंतु फिर बात को समझा नहीं है। But they haven't understood the meaning. बाप तो क्लियर करके बताते हैं The Father clarifies कि तुम्हारी कोई स्थूल लड़ाई नहीं है, that this is not your physical fight. तुम्हारी यही है सूक्ष्म विकारों की लड़ाई। This is the fight with the subtle vices.
तुम्हारी है सूक्ष्म, Your fight is subtle, और वो दुनिया में लड़ाई लड़ते हैं स्थूल। and in the world they fight physically. तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं है। You don't even have an enemy. बाप ने समझाया है The father has explained ये तुम्हारी लड़ाई है वास्तव में साइंस से। that in reality your fight is with science. तुम साइलेंस वाले हो, You are the silent ones. वो साइंस से घमंडी है। Those in science are arrogant. तो साइलेंस और साइंस की लड़ाई है। So there is the fight of silence and science. साइंस से वो विनाश करावेगी, They will cause destruction through science, और तुम साइलेंस से नई दुनिया की स्थापना कराते हो। and through silence you bring about the establishment of the new world. साइलेंस से स्थापना होती है। Establishment takes place from silence. तो तुम गुप्त सेना हो। So you are the incognito army. हर एक को आत्मा समझो। Consider everyone to be a soul. देही अभिमानी बनना है। One has to become aware that one is a soul in the body. देही अभिमानी बनने से ये जात पात आदि का भी अभिमान निकल जाएगा। The arrogance of caste, sect, and so on will disappear by becoming Dehi Abhimani. देश देश का भी अभिमान हो जाता है। There is the arrogance of countries too. मैं बंगाली हूँ, ये गुजराती है। I am Bengali. He is Gujarati. ये भी देह अभिमान है। This is also the arrogance of the body. आत्मा कोई बंगाली गुजराती नहीं होती है। The soul is not any Bengali or Gujarati. आत्मा इस जन्म में बंगाली है, अगले जन्म में गुजराती बन जाएगी। In this birth, the soul is Bengali. In the next birth, it will become Gujarati. शरीर बंगाली गुजराती होता है। The body is Bengali Gujarati. आत्मा अभिमानी कभी नहीं कहेंगे One who is soul conscious will never say, कि मैं गुजराती हूँ, ये बंगाली है। I am Gujarati, he is Bengali. ये सब है देह अभिमान। All this is body consciousness. कोई भी धर्म, कोई भी जातवात वाला हो, भेद नहीं होना चाहिए। It doesn't matter which religion, which caste one belongs to. There should be no difference. देह का अभिमान छोड़ करके Having renounced body consciousness, अपन को और दूसरों को भी आत्मा समझना। one has to consider oneself and others to be souls. जबकि बेहद के बाप की तुम बेहद की ईश्वरीय संतान हो, Since you are the unlimited progeny of the unlimited Father, तो तुमको शुद्ध आत्मा का अहंकार होना चाहिए। you should have the pure pride of soul. देह का अहंकार नहीं होना चाहिए। There should not be the arrogance of the body. घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए हम ईश्वर की संतान है। Again and again it should arise in the intellect that we are the progeny of God. सारी दुनिया को ईश्वर की संतान बनना है। The entire world has to become the progeny of God. ईश्वर के कुल के भी हो, If you belong to the godly clan, तो तुम ब्राह्मण कुल के भी हो। you belong also to the Brahmin clan. ब्रह्मा की संतान हो ना। You are the progeny of Brahma, aren't you? जबकि ब्राह्मण कुल के हो, Since you belong to the Brahmin clan, तो दूसरे जाति पाति आदि का भेद नहीं आता है। the distinction of other castes, sects, and so on doesn't arise. ब्राह्मण तो श्रेष्ठ विचार वाले होने चाहिए। The Brahmins should be the ones who have the elevated thoughts. यहाँ तो हर प्रकार के बच्चे आते हैं। All the types of the children come here. कोई गरीब आता है, कोई साहूकार आता है, Some poor come, some rich come, कोई अच्छी अच्छी पोजीशन वाले भी आ जाते हैं। and some with good positions come as well. बाबा को तो सबके साथ बड़ी संभाल से चलना होता है। Baba has to deal with everyone with great attention. तुम्हारे सुख के लिए बाबा मददगार बनते हैं। Baba becomes a helper for your happiness. शिव बाबा के पास कोई देते हैं, If someone gives to Shivbaba, तो शिव बाबा कोई परम धाम में ले जाएगा।
Will Shivbaba take that to the supreme abode? तुम जो देते हो वो तुम्हारे ही काम में लगा देते हैं। Whatever you give, he invests it in only your work. तुम्हारे रहने आदि के लिए मकान आदि बनवाते रहते हैं। He keeps getting built houses and so on for you to stay there. समझो कि कोई ने अपने पैसे से मकान बनवाया। Suppose someone got a house built with their own money. वो बाबा के पास आता है। He comes to Baba. तो जरूर उसकी वैसी ही जगह पर रखना पड़ेगा। Then certainly he will have to be kept in the place similar to that one. उसकी खातिरी करनी पड़ेगी। He will have to be treated with hospitality. क्योंकि सबके कल्याण के लिए काम किया है। Because he did work for the well-being of all. दूसरे कोई से बदली करवाना, To get exchange something with someone. ये तो सब चलेगा। This all is fine. इसमें फिर बच्चों को ख्याल नहीं आना चाहिए The children shouldn't think कि बाबा इन साहूकारों का बहुत ध्यान रखते हैं, हमारा ध्यान नहीं रखते। that Baba attaches a lot of importance to those rich men and he doesn't attach importance to them. कोई बच्चे कब तो बिगड़ पड़ते हैं Sometimes some children get angry कि यहाँ तो बहुत पक्षपात करते हैं। that there is a lot of partiality here. बाप तो समझते हैं The father thinks कि बच्चों को ऐसे ख्यालात कभी नहीं करना चाहिए that the children should never think like this, कि बाप पार्शियलिटी करते हैं। that the father is partial. 12 जुलाई संसद की वाणी का चौथा पेज। The fourth page of the Vani of July 12th, 1967. बाबा जानते हैं Baba knows कि किन बच्चों के लिए कैसे मकान निकालना है, what building should be prepared for which children, कहाँ पर उनको रखना है, कैसे उनकी परवरिश करना है। where they should be accommodated, how they should be taken care of. ये तो बाप है ना, He is the father, isn't he? ये भी जानते हो You know this as well. कि घर में सन्यासी को व बड़े आदमी को मंगावेंगे If we call to the house a sannyasi or a man of great importance, तो उनकी खातिरी करेंगे ना। we will treat him with hospitality, won't we? यहाँ तो बाप बड़ा रमतू रमजबाज है। Here the father is a great Ramtu Ramajvad. It means that he is the one who gets things done in a playful manner. No one comes to know what he did. बच्चों को कब संशय नहीं आना चाहिए। The children should never have doubts. बड़े बड़े आदमियों की खातिरी करते हैं When he treats the man of great importance with hospitality, तो समझ जाना चाहिए one should understand ये बाप खातिरी क्यों करते हैं। why the father gives this hospitality. श्रीमत हर बात में कल्याणकारी होती है। The Srimad is beneficial in everything. बाबा तो कब कोई को 2-3 हजार की सौगात भी दे देंगे। Baba will sometimes give someone a gift worth 2,000-3,000. तो ये देख करके So seeing this, अंदर में कोई ख्यालात नहीं आना चाहिए। no thoughts should occur inside. कोई को 5-10 हजार की भी दे देंगे। He will give something worth even 5,000-10,000 to someone. बाबा समझते हैं Baba understands कि आगे चलकर के ये भारत की सेवा में मददगार बनेंगे। that in the future he will become a helper in the service of Bharat. बाप है ही भारत के लिए खास। The father is especially for Bharat. भारत को ही जीवन मुक्ति में ले जाते हैं He takes just Bharat to the liberation in life, और बाकियों को तो मुक्ति में ले जाएंगे। and the others will receive liberation. कहेंगे बाबा ऐसे तुम क्यों करते हो। They will say, Baba, why do you do like this? भारत में ही आकर के इनको स्वर्गवासी क्यों बनाते हो। Why do you come only in Bharat and make them the residents of paradise? हमको आकर के हमारे देश में स्वर्गवासी क्यों नहीं बनाते। Why don't you come to our country and make us the residents of paradise? ये बातें बाप में कभी नहीं आना चाहिए। These talks concerning the father should never happen. बाप तो है ही कल्याणकारी। The father is only benevolent. ऐसे ऐसे कब ख्यालात नहीं आना चाहिए।
The thoughts like this should never occur. कारण को बताया नहीं He didn't mention the reason कि ये ख्यालात क्यों नहीं आना चाहिए। why these thoughts should never occur. कोई विदेशी बैठा हो, If some foreigner would be sitting, ये प्रश्न क्यों नहीं कर सकता है कि हमारे देश में क्यों नहीं आते। why can't he ask this question? Why doesn't he come into our country? हमारे देश में आकर के स्वर्ग क्यों नहीं बनाते। Why doesn't he come to our country and make paradise? है? नहीं, A student is saying something. No. जो इस तरह सोचने और समझने और पूछने वाला बच्चा है, Has the child who thinks, understands, and asks in this way वो बाप का आत्मा रूपी बच्चा बना है। become the child of the father in the form of the soul? आत्मा नहीं समझते हैं तो समझते हम इस देश के हैं। If they don't consider themselves to be souls, they think that they belong to this country. अगर आत्मा समझे If they considered themselves to be souls, तो कभी ये बात नहीं पूछेंगे they would never ask this. कि भारत में ही क्यों आते हो, Why do you come only in Bharat? हमारे देश में क्यों नहीं आते। Why don't you come to our country? अरे आत्मा का कोई देश होता है क्या। Oh, does the soul belong to any country? आत्मा आज भारत में पैदा होगी, Today the soul will be born in Bharat, कल विदेश में पैदा होगी। and tomorrow will be born in a foreign country. विदेशियों का संग लगता है तो विदेश में पैदा होते हैं। If it is influenced by the company of foreigners, it is born in a foreign country. नहीं तो जो आत्मा बनते हैं, आत्मा बनने का पुरुषार्थ करने वाले हैं, वो कहाँ जन्म लेते हैं। Otherwise, where are those who become souls, who make efforts to become souls born? पहले पहले कहाँ जन्म लेते हैं। Where are they born in the beginning? जो आत्मा बनने के स्वभाव वाले हैं, आत्मा बनते हैं, आत्मा बनने का पुरुषार्थ करने में आगे जाते हैं, वो कहाँ जन्म लेते हैं पहले पहले। Those who have their nature to become a soul, those who become souls, who go ahead in becoming souls, where are they born in the beginning? भारत में जन्म लेते हैं। They are born in Bharat. जो देह अभिमानी है, Those who are body conscious वो आत्मा बनने की पढ़ाई पढ़ ही नहीं पाते। can't study the teaching to become a soul. फिर कहते हैं हम इस देश के हैं, हम उस देश के। Then they say, I'm from this country, I'm from that country. वास्तव में Actually, आत्माएं तो सब पहले पहले आती हैं भारत में, all the souls come in Bharat in the beginning, और देह अभिमानी सब आते हैं विदेश में। and all the body conscious ones come in the foreign lands. तो बोला, So it was said, कोई कहेंगे ब्राह्मणी भी जानती है some will say, and Brahmani knows as well, कि अच्छे अच्छे मददगार को आदर जरूर देना चाहिए। that a good helper should be respected. बच्चों की ही संभाल होती है। Only the children are sustained. बहुत बच्चे आए तो उनको कैसे रहना पड़े। If many children came, how would they have to stay? कोई कोई बच्चों को तो गद्दे भी देने पड़ते हैं। Some children will have to be even given a mattress. कब तो गलीचा आदि भी डाल करके उनकी टिप-टाप करते हैं। Sometimes he gives them a small carpet and makes them feel tip-top, उनको जो कल्याण हो जाएगा according to how they will benefit. तो बहुतों का कल्याण करेंगे। They will care for the well-being of many. तो बच्चों को कभी इन बातों में संशय नहीं लाना चाहिए। Therefore, the children should never have doubts about this. ब्राह्मणों में भी सभी नंबरवार हैं। Also, among the Brahmanis, all are number-wise. कोई ब्राह्मणी को बाबा पुचकार भी देंगे, Baba will also embrace some Brahmanis. बहुत प्यार करेंगे। He will give lots of love to them. अच्छी सर्विस नहीं करती है If they don't do service well, तो फिर उनको सावधानी देंगे then he will warn them. कि तुम्हारी मेरे पास ये रिपोर्ट आती है, I have this report about you.
बाबा सबको लिख देते। Baba writes to all. ब्राह्मणी का देह अभिमान आदि कहीं पर भी देखो If you see somewhere the body consciousness of the Brahmini, तो बाबा को रिपोर्ट करके फट लिखना चाहिए। you should immediately write a report to Baba. फिर उनको बदली कर देंगे। Then he will change them. शिव बाबा के साथ साथ ये बाबा भी तो अनुभवी है ना। Together with Shivbaba, this Baba is also experienced, isn't he? ये भी मेहमानों की खातिरी बहुत अच्छी करते थे। He too used to give good hospitality to the guests. बच्चों से भी जास्ती मेहमानों की खातिरी करते थे। He used to give more hospitality to the guests than to the children. तो ऐसे ख्यालात कब नहीं करना कि भगवान होकर भी ये एक रस होकर सबके साथ क्यों नहीं चलते हैं। So one should never think that why, despite being God, he doesn't deal with everyone in the same way. बाबा को तो सब ख्याल रखना होता है। Baba has to pay attention to everyone. तुम बच्चे सतो प्रधान बनते हो When you children become Sato Pradhan, तो सामग्री भी तुम्हारे लिए सब फर्स्ट क्लास होती है। all the materials for you are first class. यहाँ क्या है? What is here? ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। No one in the world knows this. भक्ति मार्ग में तो माथा ही ठोकते रहते। On the path of the religious devotion, they keep hammering their heads. यहाँ पर तो वो माथा आदि ठोकने की कोई बात नहीं। Here there is no question of hammering the head and things like this. तुम बाप के सिकीलदे बच्चे हो। You are the long lost and now found children of the Father. कब कोई बड़ा दिल होता है Sometimes someone is big-hearted, तो पाँव भी पड़ा जाता है। so they touch his feet. वहाँ पर जो है वो यहाँ पर नहीं होता है। What is there, it is not here. ये तो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। This is the Father as well as the teacher and also the Guru. तो बार बार नमस्ते करता रहना पड़ेगा। So one will have to greet him respectfully again and again. तुम कहेंगे बाबा नमस्ते, If you say Baba Namaste, तो बाबा भी कहेंगे नमस्ते। then Baba will also say Namaste. उत्तर तो जरूर देना होता है। Certainly, one has to give the response. बाकी तुम बच्चे गुप्त हो। But yet, you children are hidden. तुम्हारा एवरीथिंग गुप्त है। Everything of yours is hidden. शिव बाबा को कोई दान नहीं देते। You don't give any donation to Shivbaba. स्वर्ग में तो जो फिर इतना मिलता है You receive so much in paradise जो तुम इसको दान कह ही नहीं सकते हो। that you absolutely cannot call this here a donation. ये देना है या लेना हुआ? Is it the act of giving or is it the act of taking? भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ करते आते हो। On the path of the religious devotion, you have been doing things for God. तो वहाँ तो एक जन्म के लिए ईश्वर देते हैं Over there God gives for one birth, और यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर के लिए लेते हो। and here you take for many births. यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए लेते हो। You take here for 21 births. बाप गरीब निवाज है ना, The Father is the Lord of the poor, isn't he? फिर वो क्या लेंगे? Then what will he take? वो तो भारत को साहूकार बनाते हैं। He makes Bharat a rich man. ये बातें भी तुम ही समझते हो। Only you understand these issues. वेद का बाप आते हैं, The unlimited Father comes, आकर के स्वर्ग बनाते हैं। and having come, he creates paradise. स्वर्ग यहाँ भारत में ही था। Paradise was only here in Bharat. भारत को ही स्वर्ग बना करके जाते। He makes paradise of Bharat itself and goes away. बाप ने स्वर्ग बनाया था। The Father had created paradise. ये बातें सीढ़ी पर समझाना बहुत सहज है। It is very easy to explain these issues on the basis of the ladder. बच्चों को कभी एक दो में ख्याल नहीं आना चाहिए। The thoughts should never occur to the children. ब्राह्मणी भी ढंग से चलती है। The Brahminis also behave with manners. समय समय पर According to the times, व्यक्ति को देख करके खातिरी की जाती है। they look at persons
and give the hospitality. तो कोई को फिर भी दिल में नहीं आना चाहिए. Therefore, this shouldn't arise in anyone's heart. भूल चूक से अगर कोई कुछ कह भी देता है, Even if someone says something out of absent-mindedness, तो उन बातों को एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल लेना चाहिए. one should listen to that with only half an ear and let it out. जिससे तुमको दुख फील होता हो, वो बातें सुन करके एक कान से दूसरे कान से निकाल लो. Listen to something which makes you feel sorrowful with only half an ear and let it out. सहनशील बनना चाहिए. We have to become tolerant. हम तो जाते हैं अपने सुख धाम में, We go to our abode of happiness. तो हम इन्हें छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही क्यों देवें? So why should we pay attention to these minor issues? तो सहनशीलता का भी एक गुण है. So the tolerance is also a virtue. ये गुण सब में नहीं होता है, Not everyone has this virtue, क्योंकि सब नंबरवार है. because all are number-wise. सहनशील बनना है. One has to become tolerant. ज्ञान मार्ग में तो अपनी ही मस्ती में रहना चाहिए. On the path of knowledge, one should remain in their own intoxication. हम तो ऐसे धाम में जाते हैं We go to such an abode जहाँ दुख की कोई बात नहीं होती. where there is no question of sorrow at all. मेरा बन करके अगर फिर पाप किया तो 100 गुना दंड हो जाएगा. If someone committed a sin after becoming mine, there will be punishment of 100 times. रोना आदि भी नहीं चाहिए. One shouldn't cry and so on also. कोई मर गया तो क्या हुआ? One died, so what? कहते हैं मर गया, They say he died. वास्तव में शरीर मरता है, Actually, the body dies. आत्मा तो मरती नहीं. The soul doesn't die. जा करके दूसरा शरीर लेके It goes and takes another body. तो उनको क्या याद करना है? So why remember that one? मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं आता है. The human body is of no use. जानवरों की तो हड्डियां भी काम में आ जाती हैं. The bones of the animals are useful. मनुष्य का मर्तबा तो सिर्फ जीते जी है. The human being is respected only when he is alive. देवताएं भी पूजे जाते हैं, The deities are worshipped. तो आत्माएं भी पूजी जाती हैं. Therefore, the souls are also worshipped. मगर बाप कहते हैं मैं तो सिंगल पूज्य हूँ. But the father says, I am worthy of the single worship. मेरी डबल पूजा नहीं होती है. I am not double worshipped. और तुम बच्चों की तो डबल पूजा होती है. And you children are worthy of the double worship. तुम जब आत्मा बन जाते हो When you become souls, तो शालिग्राम के रूप में तुम्हारी पूजा होती है. you are worshipped in the form of the shaligrams. Shaligrams, small round stones considered sacred in the path of religious devotion. और मूर्ति के रूप में भी तुम्हारी पूजा होती है. And you are also worshipped in the form of the idols. तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं. He tells us so many good things. कोई दूसरा सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझा नहीं सकता. Apart from the Father, no one else can explain these topics. अच्छा, All right? बच्चों को विदाई. ओम शांति. Farewell to the children. Om Shanti.